Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the missile destroyer INS Mormugao. So recently we have seen that Indian Raksha Mantri Sri Rajnath Singh ji has commissioned the naval ship Mormugao, which is basically the second warship of the P-15B class of stealth-guided missile destroyers. So this INS Mormugao is one of the world's most technologically advanced missile carriers. With over 75% indigenous content, it is a testimony to India's excellence in design and development of warships. And also it gives a shining example of our growing indigenous defense production capabilities. So this warship will meet the present and future needs of our country as well as our friendlier countries across the globe. So this commissioning of this INS is indicative of the large strides India has taken in warship design and building capacity over the last decade. And it also adds to the illustration of Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative. And it also reinforces the Navy's commitment to supporting India's transformation in a global shipbuilding hub. तो आज अगर मैं इस शिप के बारे में बोलूं तो इस शिप का जो लेंथ है 163 मीटर्स है. ठीक है, इनका लेंथ 163 मीटर्स है एंड 17 मीटर्स का एक ब्लेड है विद अ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ अराउंड 7400 टन्स. ओके, सो ये आज जो INS Mormugao है, it is packed with some of the sophisticated state-of-the-art weapons and sensors such as surface-to-surface missile and surface-to-air missiles. Also, we could see that the ship is fitted with some of the modern surveillance radar, which provides target data to gunnery weapon systems. Also, its anti-marine, anti-submarine warfare capabilities are provided by indigenously developed rocket launchers, torpedo launchers, and also some of the helicopters. Okay, so आज ये जो हम लोग कर रहे हैं, it is basically to tackle some of our dominance in the Indian Ocean region because of the changing dynamics, because of the over aggressive policies of the China. ठीक है, तो आज हम लोग के पास जो वारशिप्स है, इनमें से एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है, क्रूशल्स रहता है, डिस्ट्रॉयर्स रहता है, फ्रीगेट रहता है, कोरवेट्स रहता है, सबमरीन्स रहता है और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स रहता है. ये है वारशिप्स ऑफ द 24th सेंचुरी. तो आज इंडिया के पास क्या क्या है? डिस्ट्रॉयर्स इतने सब है. ओके, तो दीज आर द डिस्ट्रॉयर्स दैट व्हाट टुडे वी हैव गॉट. ओके, तो इनमें बस एक मोरमुगो जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है. ओके, तो यहाँ पे आजकल बहुत कम, दुनिया में ऐसे कम कंट्रीज है जहां पे इस टाइप का टेक्नोलॉजिकल वारशिप है. ओके, सो देयरफॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट revolution in the context of Indian Navy as also for the security of our country. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. इंक्रीज इन नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू. तो व्हाट इज अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेट डायरेक्ट जो टैक्स रेवेन्यू है वो 20% इंक्रीज हो गया है. ओके, विच राइजेस टू अराउंड 13.63 lakh crore. So what is this? Basically, this direct taxes. So direct taxes is paid by a person or an organization responsible for paying tax directly to the entity that imposed it. So an individual taxpayer, for example, pays direct taxes to the government for various purposes, including income tax, real property tax, personal property tax, or taxes on assets. So these direct taxes are based on the economic principle that states that those who have more resources or earn a higher income should bear a greater tax burden. ठीक है, तो आज यहाँ पे जो हम लोग का डायरेक्ट टैक्सेस का जो इंटर रेवेन्यू है वो बढ़ सा गया है. ओके, सो वी हैव गॉट वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइज इन टैक्स कलेक्शन. ये किस लिए हो रहा है? स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए हो रहा है. ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन दैट इन द रीसेंट टाइम्स द प्रोसेसेस एंड प्लगिंग ऑफ टैक्स लीकेजेस through effective use of technology is seen by the tax department. Also, effective filing of income tax return is on another area where this increase can be seen. Also, we have seen about the economical recovery after the COVID pandemic, and thereby we have seen about the corporate tax getting much more as of the earlier times. So, आज corporate tax 25 to 26% का एक growth rate में बढ़ रहा है. Also, we could see about the efficient assessment of incomes because intensive and extensive use of data analytics and artificial intelligence has prompted assessments to report people's income accurately.
ओके तो इसी के लिए आज हम लोग का जो देख रहे हैं कि हम लोग का जो अभी टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन है ये 20% ग्रॉस मॉप अप हो गया है इन टू द टाइम पीरियड और टू द अमाउंट ऑफ अराउंड 13.63 लाख करोड़। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज था अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आते हैं न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। So recently we have seen that the country said that a conservation of biodiversity must also be based on common but differential responsibilities and respective capabilities as climate change also impacts nature. So as the 196 parties of this Convention on Biological Diversity finalized negotiation for a post 2020 global biodiversity framework, so a new setwork यहाँ पे frame किया गया है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से at CBD at COP 2015, a biodiversity conference in Montreal, that is in Canada, the country said that developing nations bear most of the burden of implementing the targets for conservation and therefore require adequate funds and technology transfer for this purpose. So discussions also held on eliminating subsidies. So यहाँ पे एक फंड क्रिएट किया गया है जो कि यहाँ पे क्या करेंगे, they will facilitate the respective or they will directly help the developing countries so that they could implement some of the environmentally strict policies on their respective country. And यहाँ पे इन लोग को थोड़ा बहुत अगर फाइनेंस नहीं किया गया then it will be a lot many number of effect that will have in the environment. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्ट कैपेबिलिटीज के द्वारा यहाँ पे हम लोग का एक जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसी के हिसाब से 196 पार्टी का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां पे बोला गया कि यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी फंड क्रिएट करना चाहिए विच विल हेल्प द रेस्पेक्टिव न्यूली एमर्ज कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग वेरियस नंबर ऑफ एसोसिएटेड क्लाइमेट चैलेंजेस दैट दे हैव एंड विच विल अल्टीमेटली अफेक्ट द ग्लोबल अर्थ। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बातचीत किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया नेपाल पावर ट्रेड। तो ये देखो रिसेंटली जो इंडिया और नेपाल का जो ये अपर टमाकोशी प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गए हैं। ठीक है, तो ये अपर टमाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 456 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जिसको चाइना का और नेपाल का थ्री गॉर्जस डैम बनाया बताया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा डैम है और ये पूरे नेपाल को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है इन लोग का ये पूरा नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बना गया है ऑन द टमाकोशो रिवर ऑल्सो नोन एज also it's a tributary of the Saptakoshi river, okay, which is therefore in the Indo-Tibetan border. ठीक है, सो आज ये जो प्रोसेस है ये हम लोग बना रहे थे इंडिया और नेपाल के कोऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो देखते हैं कि चाइना का जो एक इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे इंडिया को नापसंद है कि क्यों आप लोग ने यहाँ पे इंक्रीज चाइनीज इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कंट्रैक्टर्स है जो कि चाइनीज है वो लोग आके यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया को नामंजूर है कि यहाँ पे अगर चाइना आ गया तो हम इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। ऑल्सो वी विल नॉट अलाउ द एक्सेस ऑफ दिस current directly from Nepal to Bangladesh as well as countries like Sri Lanka. ओके तो इसी के बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ है। ठीक है, विद रेस्पेक्टिव टू दिस नेपाल, लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विद रेस्पेक्टिव टू दिस कंट्री ऑफ नेपाल दैट इज सेइंग अबाउट दिस टामाकोसी प्रोजेक्ट। ठीक है, छोटा सा न्यूज था, जस्ट याद रखना कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, किस एरिया में है और कितना मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है और कौन सा रिवर्स पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, चलो लास्ट में आते हैं गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई। So this news is basically explaining the steps taken by the current government at the Center for Good Governance. So it also explains the ways to promote the good governance. So the current government has repealed an estimated 2,000 obsolete acts and statutes and subordinate legislations, which includes dozens of appropriation acts, excise act, foreign recruiting act, etc. So there existed a contentious provision in the Prevention of Corruption Act and any pecuniary benefits to any private parties without public interest, regardless of whether there was an intent to cause such gains or not, was constructed as criminal misconduct. Therefore, even honest officers had to face this cruel law, and this government finally scrapped this provision. So another step of this government towards good governance is the DigiLocker, which is an integral part of the Indian stack and now has more than 5 billion documents and about 100 million users.
So today, the government is doing some of the good things associated in repealing some of the obsolete laws that are often tools for rent seeking. So take the example of Karnataka. It is one of the India's fastest growing state. However, Karnataka ranked 17th in 2019 Business Reforms Action Plan national rankings. क्यों? बिकॉज कर्नाटका में अभी भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फोर्ट है इन एसोसिएशन विद वेरियस नंबर ऑफ ऑब्सोल्यूट लॉस. आज मैं अगर डिजी लॉकर के बारे में बोलूं, state governments can set up enterprises digi lockers to store all documents that any small or large business is expected to possess. So Karnataka has implemented Kutumba, that is a family beneficiary database, Fruits, that is the farmers registration and unified beneficiary information system, all leading to more good governance. So आज no state government or the government of India has any common portal through which businesses even get to know fully the extent of compliance burden. So there is a need to create a common portal where all the compliances for a particular industry are listed. Also, good governance is also the responsibility of enlightened citizens who should give some thought to complex trade-offs and like compliance of tax laws in national interest, and thereby we could make it as a system of progress if we want to make the country in good rankings in the world scenario and also to see these countries in the world forum. So therefore आज हम लोग के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और इसके लिए जितने भी हम लोग का एक ट्रेडिशनल और कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हम लोग को खत्म करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जितने भी ऑब्सोल्यूट लॉज है उसको खत्म करके हम लोग को आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, विच वुड मीट द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम सोसाइटी. So that is saying with this respective editorial. Okay, so we have got these 5 more MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our Telegram and WhatsApp channel for further updates. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.